recently Snapchat पे telling about you. क्यों करेगा तू ये? कितना pathetic लगता है वो. Bro, it was so अरे मैं भगवद गीता पढ़ना चाहता हूँ. कल रात को मैंने 2 घंटे पढ़ाई की है. सुबह स्कूल में मैं 50,000 की ट्रिप का फर्स्ट पेमेंट देके आई हूँ. मैं दिल्ली जा रही हूँ. क्योंकि he could never afford it. Come on, he could never. उसकी तो कॉम्प्यूटर कार्ड भी लेके आया. ट्रिप में पैसे जा रही है. हाँ, मैं भी ट्रिप में मैंने ट्रिप के पैसे दे दिए. मैं जिम जाके आई हूँ. मैंने भगवद गीता स्टार्ट कर दी है. मैं पूजा में भी बैठ चुकी हूँ सुबह से. जीवन बहुत अच्छा चल रहा है. अभी बस योगा प्राणायाम करना बाकी है. फिर बस साधु बनने वाली हूँ. दिल्ली के साथ है ट्रिप पे? भाई भी बहुत नहीं मीटर पे. मैंने तो भाई के शो पे पेड़ डाली. मेरे पापा ने बोला इतना मन कर रहा है तो चल ले जाऊंगी. डब्ल्यू डैड. उनको ऐसा मैं इतनी बार बोलूंगी तो मना करने नहीं होता. वो थोड़ा सा youngest child privileges you know. नहीं SST को एक ही नोटबुक बनाना है. दो मैंने एक ही बनाया. उससे फर्क नहीं पड़ता. कोई चेक नहीं करता है दोनों टीचर. तेरा सारा तो पता खत्म छपी नहीं था. छपे नहीं बट मैं सब पिक में ओह लाइक दिन में मेरे को 4 बार बोल दे कि मेरे को बनी. एक बार बोलेगा वर्दी नहीं पड़ रही. फिर बोलेगा मुझे मेरे ट्रस्ट इश्यूज है. मैं पे ट्रस्ट नहीं कर सकता. मैं क्या करूँ. मैं जाना तो कर दे. मेरी आरती उतारेगा. मेरे को ऑब्सेस्ड होगा. लाइक एक टाइम होता है when you get obsessed. स्टार्टिंग में ऑब्सेशन नहीं मेरे को बहुत हेल्प करता है. व्हाट टेंशन सी है यार. जी टेंशन सी है. मैंने कभी तो मेरे गाइस हम लोग टॉकिंग कर रहे हैं. ज्वाइन कर लो. मैंने कभी तो मेरे प्लेलिस्ट का स्नैप भेजा था. तो ये मेरी प्लेलिस्ट मैंने भेज दिया. एक्चुअली मुझे बहुत समझ आता है. मैं इसलिए मेरे को ये सारा टाइम में बोलता है कि मैं तो बस खेला था. प्लेलिस्ट खेला था. मेरी प्लेलिस्ट में था. आई फॉल इन लव. मैं अपने प्लेलिस्ट के साथ फॉल इन करता हूं. सो क्यों हो रहा है? क्यों वो मेरा सब क्रेजी शिट. ये मेरा अंदर से ना एकदम लो हो रहा है. बाद में मैंने तो रिस्ट्रिक्ट किया. उसको ही समझा. तो मैंने 2-3 बार डीएम्स खोले. इसका नहीं होना चालू है. तो छोटी बच्चा मेरे फ्रेंडशिप पे से भरोसा उठ जाएगा. आजा भाई आजा. मैंने क्या किया बोल मुझे. ये अभी थोड़े टाइम पहले मेरी स्टोरियां लाइक करना चालू किया. एक तो तुम्हें हाफसी देखी. हाफसी मेरी बहन ने देखी. मैं देखूंगी. बहुत सही है. आपसे अरे बढ़िया से दी देखी ना. देखो मैंने 3 एपिसोड देखा है. अरे मैं कल जो रोई हूँ ना. सुबह सुबह मेरी आंखें लाल हो गई. ओके तो क्या किया तुमने रात में? अब देते ही हो पैसे करने के लिए. मेरी अलाउंस पापा देने लगे इस महीने से. 500 में दे रहे हैं. रिच की बात नहीं है. ऐसा नहीं चाहिए कि ताकि मैं सेविंग्स में अलग से निकाल रखूं. बट 500 की नोटों में दे रहे हैं. मैं कहाँ से सेविंग्स निकालूं? खर्चे की तो ज्यादा सोच सारा. फिर जब वो खत्म हो रहा था और चलो अभी उनको ना मैंने सिर्फ बहुत महंगी जाएगी. और उससे मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी. 3 सेट फॉर्मल लेने पड़ेंगे. 2 सेट कैजुअल लेने पड़ेंगे. एक नया मिनी वो नहीं होता ट्रैवलर्स का. क्योंकि एक्चुअली कहीं घूमने का नहीं पड़ेगी है ना. ट्रैवलर्स का क्या साल का मिस लेगा. मैं अकेली थी. तो बच्ची थी. तो धीरे धीरे चीज़ को स्कूल में स्कूल की बात करते हैं. तो आगे दूसरे आगे दूसरे डिस्कस नहीं करते हैं. इंडस्ट्री इज फुल ऑफ चीज द टॉपिक. आपको स्विच किया तो खत्म क्यों ना हो. सारा मैं चैप्टर खत्म कर दिया. मैंने बोला आज फिर खत्म करो चैप्टर. आज कौन सा चैप्टर हो रहा है? तो वो नेचुरल इको का खत्म.
अरे वो खत्म करवा के बोलते फिर से करवाएगा क्यों? क्योंकि मैं अकेली थी तो मेरे को पढ़ाना क्यों वो छुट्टी ले लेती यार, ब्रेक में चली जाती। नहीं ना वो साकर तो बोलने का खैर ठीक है बहुत ठीक है। कल कौन सा पेपर टेस्ट है मेरा पढ़ाना, मैं रोने में दिमाग खराब कर क्या टेस्ट? कौन सा टेस्ट? किस चीज का चक्कर अरे है नहीं ना मेरे पास। कैसे नहीं है? मुझे सबसे देख के पूछना पड़ता है कि कौन सा टेस्ट है। आप ही नहीं बोल रहे वेबसाइट? हाँ वेबसाइट। मैं खोल लेती हूँ, मेरा तो सर्वर डाउन है। ये हिस्ट्री चालू होगी। और वो राष्ट्रीय जनगणना ऐसा हुआ है। साइंस वाले हिस्ट्री का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और मोशन मैं नहीं कर रही। मैं बस क्वेश्चन का दे रही हूँ। मुझे कौन सा मजा आया भाई? मैंने मुझे बोला मुझे कल एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए साइंस एंड मैथ्स के लिए, तो चीज में मुझे रीजन बता सकती हो क्योंकि अबे तुमसे एग्जाम है तो पढ़ने उसको आ नहीं रहा है। तो बोलते हो कि आज थोड़े से टॉपिक थे मुझे समझ नहीं, तो चीज है कि आपको स्टडी फ्रॉम योर ओन एंड जो समझ नहीं आता है वो करो। अब मैंने पता है मुझे क्या बोला कि उनको बोल उनको समझ में नहीं आ रहा है और पूरा चैप्टर पढ़ा रही है ऐसा है। वो क्या बोल नहीं मैंने मेरी पोस्ट को समझ आता है तो बोला था तो आती है उसको बोल। तू कौन सा छोटा भी करता है क्या? समझ आ गया सुनती है क्या? तुम्हारा कपड़ा ऐसे पहनता है उसको सेंस ही नहीं भाई। मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा है, मैं कल रोज चुकी हूँ काफी है मेरा मुझसे ज्यादा तो रिग्रेट नहीं हो रहा होगा। अरे भाई तो अभी बस को तो छोड़ ही दे इसका छावा अभी बस की क्लाइंट पहनता था अभी बस सो सेक्सी है जो ये क्वेश्चन से पांच करने के बाद कौन अरे बीसीटी किया था हम इसकी शूटिंग कर रहे हैं मेरा वाला अभी बस भी पहनता था वो तो पहनता था उसे पढ़ रहा पहनता था मैंने उसकी सब देखे अरे वो सिर्फ बॉक्स में देखते थे तो मेरी भावनाओं को समझ है छोड़ा अरे ठीक है मैं भी छोटी हूँ देख के बस बॉडी है खुले के रहता है इसके पास बॉडी नाम की चीज नहीं है। अरे वो इतना स्किनी है उसकी बस है सो लकी का है जी मेरे को खुद लकी फील नहीं करती थी मेरे को लगता था मेरे भाग फूट गए समझ है छोड़ा भी मैं ठीक और ब्रेक चाहिए यही बोलो सॉरी ना ऐसे देखते टाइम पे कुछ हो जाएगा लड़के लोग इसके लिए भी एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा मेरे को उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी से ड्रॉप करने आया था गाइस डेफिनेटली उसका बॉयफ्रेंड आया था मेरा तो कोविड खत्म हो गया ना तो मैं 12 बजे तक मेरी बहन से थेरेपी ले गई थी उसके पहले मैं मालूम नहीं मैंने तो देखो उसे देखो मैंने सोचा स्कूल में झगड़ा हुआ था तो ऋषि जय और ये उनका एक और दोस्त है स्कूटी लेके आए थे बस वो उनकी इतनी पड़ी और राउंड राउंड कर रहे थे तो मैं उधर को पहले बता देती हूँ बिगड़ कर समझा तो बता दे तो अभी प्रतीक मैंने तो उस ऋषि ने याद जो मैं उसको देखा उन्होंने मेरे को देखा और चले इतना सेंस था बाद में मैंने उसको टेक्स्ट किया तो टेक्स्ट भी लेकर बोला हाँ वो बोल चुके हो मैंने उसको बुलाया वो बोलता है नहीं मैं भूल जा रहा हूँ एक दिन पहले एक तो मेरी प्रायोरिटीज में नहीं मुझे कभी किसी ट्रिप पे पहले आता है नहीं याद है तो मेरे को हमेशा बुश करता रहता है बस मैं छोड़ना आपने वो मेरे पास मेरे कहते लड़कों को डेट करने से कोई क्या पर तू लड़का नहीं है समझी थी ये तो भूल है देवी चंद्र
वो भी तो दीदी को भी है। सिद्धि इधर देखना, इधर देखना। भाई हम नए बच्चे को ड्रॉ किए कभी देख रहे थे ना हम क्या क्या किए क्लास में। एक घंटे स्कूल में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, उसका सीसी होता है ना, उसमें पीटी पे लेके गए, केमिस्ट्री का कुछ नहीं लिखवाया और आईटी में ओरल टेस्ट ना आज कुछ सैटरडे हमारा होता है। नहीं हम लोग का नहीं होता, ये छुट्टी पर हम लोग का रखा था क्योंकि हम लोग को बारिश की फर्स्ट छुट्टी मिल गई थी, तो उसको अभी कवर कर दो। अरे बाबा हमारा स्कूल तो ऐसे ही रहता, मैंने नहीं किया, तो पैसे दे के आई। मेरी मम्मी सुबह सुबह बोले रेडी हो जाओ, किस बात पे तुमने कल रेडी को बोला था ना, वो मान गए। मैंने तो ऐसे ही रोने भरे में बोल दिया था कि नहीं सीखा वो हिंदी की मैम को क्या होती है, हर एक हिंदी टीचर होती है, वो हर लिखवाती एक हिंदी है टीचर होती है, मैं बोल रही हूँ इसलिए मैंने नहीं किया। एक तो आए मैथ्स में कुछ नहीं हुआ। हाँ नहीं, वो रैशनलाइज फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन पर मैंने किया था। मेरे काम करेगी, मेरे को स्वेटशर्ट्स चाहिए, अगर मेरे को ऑनलाइन लिखना वाइट या वाइट एंड ब्लू कॉन्ट्रास्ट में ओवरसाइज्ड क्रू नेक स्वेटशर्ट्स वहां से लेके आजियो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कहीं से भी, तो बस लिंक भेज देना, वो हर जगह को इन्फो डाल के खरीद लेगा। तो बस दे यंगेस्ट डॉटर पर भेज। मेरी बहन बोलती है ना, तो उसको किताबों के अलावा कुछ नहीं खरीदना, नील दे दे पहले फिर से खरीद लेना। उसका नीट होने वाला है 2 साल में। तो यहाँ से लेके नहीं आया ना, ठीक है ऐसे लेगा थोड़ा सी आए नहीं चलाओ या फिर ट्रेन से तो ट्रेन से नहीं तो बात से बुड़बुड़ कर माइकल जो है बुड़बुड़ नहीं, उसका ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, कुछ पब्लिक नहीं है, फेक अकाउंट बना के फॉलो करना है, कैटफिश करेंगे उसको। इसने क्या क्या सुना दी? हाँ इसका अबे अरे ये फ्रेंडशिप पे बहुत ज्यादा रंग छाल रहा था भाई, ये काला है उसकी लाइफ में कलर्स कुछ सो कॉल्ड बहनों के साथ भाई। संजू टीटी सुनना, वो तेरे आउटफिट के साथ वो अभी बस के स्लाइड्स पहन के झल्लर पैंट पहन के आता था, मैं झल्लर एटलीस्ट झल्लर ऊपर भी पहनता था, क्यों तो ये अच्छा याद एक तगड़ा दिखता है, ये कौन है ना, ये कौन? अबे ये आयुष बेहया बेशरम, इतना गंदा क्यों लगता है? मेरे को नहीं मालूम, तो रिग्रेट है। हम लोग स्कूल के चॉकलेट बैठे हैं शी, ये हो तुम लोग का चॉकलेट वो एक्चुअली चॉकलेट में डिप है ना, स्केलेटन था बे। मेरा मेरा मूड खराब हो गया, इसका आउटफिट कितना छप रही है संजीती। मेरा फेवरेट था सुपर संजीती ने स्किनी जीन्स पहनी, they weren't exactly skinny, थोड़े थे। तुम इधर देखियो मदद से, अभी बस के स्लाइड्स, स्किनी जीन्स, कमर से नीचे टी शर्ट, जैसे बॉडी पार्ट ड्रेस की तरह फिट होता है, उसको देख तो उसका टी शर्ट देख, और उसके ऊपर से महिलाओं वाला शर्ट। तौबा तौबा तौबा, मम्मी मेरे इतने बुरे दिन कभी ना आए। देख लिया तेरे को, देख लिया। He was, I would never be embarrassed of what he's wearing though. उसका aesthetic तो सिर्फ ऐसा नहीं करती थी। हाँ मैं तो क्या वो प्रॉब्लम चीज कर, मेरी बहन ने तो बोला वो चीज करा, तो देखो मेरा नाम हम 10 कर चेक करके दे दूंगी इस बात पे। एटलीस्ट चॉकलेट डिफरेंट चीज पे नहीं किया। अरे चीटिंग नहीं, मेरी बहन है, हाथ दे रहा हाथ दे, मेरी क्या चलती तेरे को क्यों सारा ये ओपा इतना टची हो छी। उसकी दोस्त है ना सारण की, आशा नाम की, वो मेरे इस क्लास में जिज्ञा की दोस्त, वो उसके पीछे लगा तुम्हारी। हाँ ये भी जानेगी ऑब्वियसली, चल आगे कहाँ तो वो उसको
तेरे से डीएम करके पूछी थी उससे बात नहीं कर। हाँ आज तक बोल रही थी कि साल मेरा पीछे लगा है। कितना अच्छा है। कैसा लगता है मुझे 11वीं का बंदा 9वीं के पीछे पड़ा है कैसा लगता है वॉइस नोट नहीं और एक लड़का भी है ना एक का फ्रेंड आयुष का वो आशा का मंजिल हाँ आयुष है क्या आयुष अरे मेरी जिंदगी रिवॉल्व होती है आयुष का आउटी भरती अच्छी बात है सब सत्यानाश हो मेरे जीवन का। मेरे पहले क्रश का नाम आयुष बीच में एमजीएम में पौनी क्रश का नाम ही आयुष था पहले पौने और आधे का भी नाम था चेतिया। मैं अभी अपने ईमो बिच फेज में हूँ। मैं अभी जा रही हूँ वो यहाँ पे कोई शॉप है ना जहाँ पे नेल पेंट मिलता है। आई डाउट जोड़ियों वाला होगा किसी तो नली स्टेशनरी पे लेके चल मेरे को जहाँ पे नली नेल पेंट विनायक चल चलते हैं एकदम नली काले काले नेल पेंट एकदम झल्लड़ बनना है मेरे को। मैं जल्दी बनना चाहती हूँ प्लीज संजीवनी को लेके जाते हैं। इयररिंग्स मिलती होंगी देखो जहाँ पे ब्लैक इयररिंग्स मिले ना मेरे लिए लेके आओ दो सेट करके इनको पैसा दूंगी। मेरे को जल्दी बनना है। क्यों बनना है ईमो फेज 100 के बाद नेसेसरी होता है बट मैं ये दूसरी बात जा रही हूँ मैं हर शॉट के बाद नहीं पाऊंगी नेसेसिटी होता है कभी-कभी यू नीड टू डू दिस यू नो व्हाट आई मीन नाउ। आई डू भाई आई इंग्लिश की कैसे लेते हो मैं तेरे को पढ़वा दूंगी तो उसकी चिंता मत ले। इतना सुंदर देखे कोई भी पढ़ जाएगा नहीं नहीं तो इसको पता नहीं चलता इसके चेहरे पर फटे मेरे को दिखता नहीं है। देखना सुंदर दिखती इधर कहाँ से कितनी तो अच्छी दिखती है। तेरा फैट में इधर थोड़ा चाहिए है बढ़ जाएगा वही तो और जहाँ पे नहीं होना चाहिए बिल्कुल नहीं है। पॉइंट है मोलेस्टिक वर्बल असॉल्ट नहीं उसने ईयरफोन्स लगाया और भावना को पता है हमेशा ये संजीत की क्लास का ऑब्वियसली उसको पता ही नहीं शायद मैं क्लास में थोड़ी तो सब शरीफ था भावना ये झूठ कितना बोलती है। मैं ध्यान नहीं देख लड़के तेरे पे ध्यान नहीं देते देख संजीत मैं बोले सारे लोग पापा को सॉरी डैडी टेक्स्ट कर ठीक है सॉरी डैडी मैं मरना चाहूँ भाई डैडी टेक मी बैक डैडी ट्रॉमेटाइज हो जाएगी ड्रामा चाहिए आज। आज का क्लास है कि नहीं नहीं मालूम भगवान का नाम तो 2-3 बार जप कर लिया। वो हिस्ट्री की क्लास होगी ना हाँ जोड़ी ओब्लो जॉली है ना जोड़ी सारा पे जॉली नहीं उसके लाइफ में बोल रही तो अपने पता है क्या किया वो पहले 14 मार्क्स है और उसमें 13 ओह नाम सॉरी गाइस मेरा कल ब्रेकअप हुआ है आज मैं पागल हो चुकी हूं वो चीज भी कर हां वैसे आया ना मन तेरे लिए इसको बताया तेरे लिए मेरे लिए मत ढूंढ पटा दिखा सेक्सी है अच्छी डन है ये जो वाले डन है भले ही अभी बस की स्लाइड आती है बट डन है भाई वो तेरे वाले खंड में तो अभी बताया कौन ऐसे वाले पैंट करके कौन बोला घंटा अरे साइड पॉकेट्स नहीं है उसके ऐसी होते थे नहीं वे वो एक ही पैंट था मैंने उसको हाँ एक ही पहन था मैंने अभी बस के वही सो क्यूट भाई तुम लोग सब कितने प्यारे लगते हो पटा ले पता ही चले ये मेरे आइस बांधता था मेरी ये मेरे घर पे भी बांधा था सो तो कितना लाइक कितना फेक था वो तो लोग को पता है ये फोटो में कहाँ है मेरे घर पे each and every boy is the same Good evening, everyone. Sorry for a small delay. Good evening. Good evening. Suprabhat. Not in the evening. She forgot to see me in the morning. Just tell me what I was doing. Completed that chapter called poverty. Completed. We'll start with economics or two new students have joined. What's your name, boy? Sir, Bhavya. And you are? Krishna.
So sure. Will we do geography then? You have your volume. So you pick up geography. We'll start with geography itself. The next Today two chapter people of this. absent. Who are they? Aditi and Anurag, both of them are sick. Anurag is hospitalized. Yeah. Look at the happiness in the face. But she has such a dark humor. Okay. She kills birds and all. Relax. Okay. Okay. You pick up your geography volume. We are in the chapter called drainage. Did I touch? No. I might just cross check for drainage because I don't know whether it is with me. I'm pretty sure we're done with that. No. We will start We with skipped drainage and we started climate. Oh. I will proceed ahead because I need to cross check whether drainage is with me or with your other teacher. So we'll start with a lovely chapter called natural vegetation. Okay. So please. I'll cross check and continue. Don't worry. So it is natural vegetation. Didn't we do natural vegetation? Yeah. Completed. We need to do climate. Climate I didn't do. No. Climate did. Then Climate after climate only. Climate we did. Sorry. That advancing. Yeah. It's okay. And what is the last chapter of geography then? This drainage. Drainage only. Sure. Population is remaining. Yeah. Okay, then you And drainage. put the heading drainage only. Since Yes. we are almost ending the portion. Page number 180. sorry. 180. Any of your school friends, two new students or totally? Like she's from Podar, so Aditi knows, and he is from And just check with them for your portion or updates, okay? So write the intro for this, then I'll explain the whole chapter slowly. Drainage refers to the pattern of the flow of any given river. Drainage refers to the pattern of flow, put a comma, of any given river describing its flow pattern, and the various landforms. You inside the bracket you write basins. Various landforms. Inside the bracket you write basins. Next point. In India, we have Indo-Gangetic. In India, we have Indo-Gangetic or Indo-Brahmaputra. Flood basins, and deltaic regions. And deltaic regions. The last sentence. New point. Next point. The pattern developed by any given river. Bracket you write flow pattern developed by any given river is purely based on the volume, velocity,
land surface, Volume, velocity. land surface, and amount of deposits carried by any river. That's it. Now you can stop writing. Amount of deposits carried by any river. Sorry, I did not hear of the carrying. Amount of deposits carried by any river. Oh. What is? So reading this, you need to tell me. Yes, ma'am. So can you switch on? Okay. So tell me, what is drainage? Normally you understand. Forget about what I have given. Is it something new? Yeah, it is. Something new, huh? What does drainage means? We refer to a gutter near to my building. Matlab, my means every building. Is it drainage? No. It's a drainage system. Even this is also drainage system. The flowing of water into the seas. Is it drainage? I have shown a small this. What is this? UCMC LC. Sea. Course of a, what is that C? Course of a the river. last sea, so I read it for you. I said this is C. Okay. So this is, we call it as upper course, correct? This we call it as middle course. And this we call it as lower course. What is this course as she was explaining? Which are the three main major rivers? In fact, I mentioned it also. Ganga, Yamuna, Brahmaputra. Correct. Are they making any features? They make. Either they make floodplain, or they make deltas, or they make estuaries, or they make sandbars, lagoons and beaches. आप बोलेगा ये सब geography में मैंने सुना नहीं. Delta सुना है? क्या है delta? Very dangerous definition. Huh? Normally you can see deltas formed at the mouth of the river, and we see called generally it is a triangular shape of fertile land, which consists of the deposit you might have heard about is called silt. Now, based on what you have written, every river has its own drainage pattern. Correct? Can we force the river to have my pattern type? No. Is your parents able to force your? No. They are. Not the drainage, your movement pattern. ऐसा नहीं करने का, ये नहीं करने का. अच्छा, she I think had to. But generally we flow in opposite direction only. पापा बोलेगा इस तरफ नहीं जाने का, मैं अभी से वहीं से आ रहा हूँ, है ना? But we cannot force the river. The river can be forced. No, it needs amount of water. कितना पानी है उसमें? Velocity. What is velocity? Speed. Very good. And deposits कितना है उसके पास? We say Ganga Brahmaputra, a gigantic river. In fact, Brahmaputra. Brahmaputra rises from where? Tibet. Tibet. What is the name of the? Let me have to. Ganga. One we say Yamuna and Brahmaputra. We have to say the source from where they flow. Anybody? 3 minutes. Ganga. Gangotri Glacier. Very good. Anybody? Yamuna? Yamunotri Glacier. Very good. What about Brahmaputra? Yamunotri. Brahmaputra? अरे we follow the logic ना. ऊपर से आएगा तो. ऐसा है क्या? No. Sure नहीं है? नहीं है. अरे गंगा का गंगोत्री हो सकता है, यमुना का यमुनोत्री हो सकता है, ब्रह्मा का नहीं हो सकता है, पक्का? तो फिर क्या है? I remember कुछ तो. हाँ कुछ तो. अरे come on, I can't name all of it. Please come on, अरे me, oh my dear, what are you saying to the teacher? Mansarovar. Correct. Yeah. So we always believe these are the sources from where flow. So normally upper course is nothing but it is source. Correct. It flows down the valleys. Am I using the right word? Or it flows down the slope of a hill. The source is very thin, so normally no erosion. Whereas when it comes to middle course, look at the width of the river. Are you seeing?
So we say it is gigantic. I mean, what it will do, maximum erosion and maximum transportation. By the time it comes to lower course, let me show you the course. Why it is taking this path? What do we call in geography in schools? Curves. But which curves they are? Remember some word, na? Come on, oi, Bulu. She doesn't know that. We call this as meanders. Yeah, meandering motion. What are meanders? Normally we find it in the lower course. When the speed of the river becomes slow, it cannot go straight because of the deposits. So when I'm explaining the word drainage, it includes everything. Where from? Upper course, middle course and lower course till it finally joins the sea. Please draw this picture in your, not a picture, small diagram in your note, so that you will have a clear cut understanding. In ICSE they have given, in fact they asked this diagram, but CBSE don't. But I want you to at least understand. Upper course, middle course and lower course. And we can go ahead with that divide and drainage pattern. Courses of the river, if you want the last class she was the only attendance of the only dignitary. But with that one dignitary also I completed the big chapter of poverty, and that also with ease. I hope you should take notes from her. We had 2 lectures and today only 1 lecture. Today Jolly Ma'am has a lecture. Because 10th CBSE the classes opened late this week. Okay. Last week they had no class, so. She keeps out of informed. And these are some GK. If you want that, also you can write. Source of the 3 rivers: Ganga, Gangotri, Yamuna, Yamunotri, and Brahmaputra, Mansarovar Lake. Okay, what is the name of the river Brahmaputra when it flows in China for Tibet? Sanko. Very good. And when it moves out of India, it enters into one more country called Bangladesh. What is the name? This is in. It is something from Yamuna only, the name of Brahmaputra. Bhagirathi. Huh? Bhagirathi is in India. Jamuna, yes. Right. Okay. These Bangli people might call it Yamuna, but it is Jamuna, something like that. So in Tibet it is called as Sangpo. When it enters India, it is called Brahmaputra, and when it goes to Bangladesh, it is known as Jamuna. Done? There is one small definition along with this I have to explain called water divide. This is your column. Okay, correct? It was she only. Sorry. Who was yawning with the Oh, it's me. Very well. Sorry. So when I use the word water divide, I always believe a stretch of river. Let me show you the flow of the river. Who is in between now? It might be a mountain. It might be a plateau. Level land तो generally नहीं होगा because river can trespass. When a normal flow of one course of a river gets blocked by a physical field landform, it is called as a water divide. Do we have water divide? Yes, Himalayas. It is called as Indo-Gangetic water divide. It is the source and it divides the flow. If I want to show exactly map, I'll say something like this. Like this. If this is the source, the Himalayas might cut. Correct? So I say if this is a landform which is coming in between, it is dividing the course of the river into various flows. So that is, it is called water divide. No need to write.
you can directly come to page number 181. You can mark there only. Did you see an elevated area, underline mountain or an upland, separating two river basins? Only underline such words. Such upland or a mountain, ये सब छोड़ देने. अच्छा ठीक है. Separating two adjoining drainage basin is known as a water divide. So just write HW there. What is HW? You write it at your home. What is a water divide? Or you want to write it right now? Yes. Okay, please write down. What is a water divide? Then very important pattern we do. Drainage pattern. Yeah, from next class onwards, please bring some maps. Huh? We might do some maps work beautifully. I think if we get here, Yeah, we get maps from here. Right? maps and graphs. Take care. This is the only batch to generally students say, okay, we'll bring it from home. The next thing that I have to discuss is drainage pattern. I'll erase this also. First one is dendritic. Sterilize. Is rectangular. Only put the heading, we'll explain, then you can write. Drainage pattern. This is the essence of this chapter. How many drainage pattern do we find in India? So what is such upland? Such an upland is this. It's called water divide. No, the word SUCHUPLA. Wait. Second line, third last word. Second sentence, third last. Space maybe. Such an maybe such an upland it should be. They just join the word. Now look here. Now at least you understand what is a drainage pattern. So as for the design, I can't say the word design. As for the pattern that you see, we divide the entire pattern found in India into 4. The first one I'm just pronouncing the way that we require from you. One is dendritic. Say. Dendritic. Second one, trellis. Trellis. This one, you know, rectangular and radial. Now look at the picture only. They given it in the volume. The first one is dendritic. Let me see your imagination. What dendritic looks? The pattern. Don't leave that piece of land that they've given. How does it look? Very good. She left that line, I think. It appears more like a branches of a tree. When we do a bit of map work, look here. So when we do this for ICSE and even for CBSE, we ask them to see the flow of the river. So where it is flowing from north to south, correct? And these are what? Small. What do we small call it? river. Very good. What do we call that? Streams. Stream. Basins. Somebody correct. It is tributaries. So now when I say this is the main course of the river, the tributaries are joining to the main course and giving us a what? Picture of a branch of a tree. That is which pattern? Dendritic. Now look at the second pattern that they're given. It is trellis. What is trellis? The main course and the tributary. Not parallel. More or less, the tributaries join the main stream at which angle? Right angle. Right angle. Not exactly. It is there. Same. Next, we have the word rectangular pattern. ये थोड़ा unique है. I'll try to show you
maybe like this. Just bear with my diagram. Huh? So this is the flow of the river. Are you seeing it? And this part, it is representing which pattern? A rectangular pattern. Now the radial is very. Wait, I'll tell you. Radial is very simple. If I have a elevated part of the land, correct? Maybe a mountain. We will have the river flowing this direction, this direction, this direction. The fourth side I cannot show you. So since this is there, I have to show you the pattern will be more or less. Are you seeing it? Actually, a contour jaisa dikhega. That's why we don't draw this. So it is flowing in all different directions except the peak. So this will form a which pattern? A radial pattern. So how many patterns come on, everyone? Dendritic. Dendritic, trendlines, rectangular and radial. Is it okay? I did not understand the rectangular. Rectangular pattern is on. You have to look at the picture like this. This is the landform where it is flowing. Now this is my main course. It takes a turn and go like this and take a turn. The question is, why does it take a turn left, right, left, right? It depends on the rock layers where it is flowing. You might have seen when I block the river, the entire flow of the river gets disturbed. How and why do we block the river? Dam. Very good. When we have the dam's construction, then we are obstructing its natural flow. If you obstruct the natural flow, it will stop doing any erosion, deposition, cutting, kuch nahi karega, because I am obstructing. So based on the landform or based on maybe pervious or impervious layer of a rock. What is impervious layer? Nahi suna hai. Impervious layer which does not allow the water to pass through. Pervious layer of the rock is allow the water to pass through. In fact, that is the reason why do we get waterfalls. And the stream is flowing. If this is pervious layer, it will erode the rock. Are you seeing? Yes. So the water will, instead of going flow, it will take a turn. This is impervious. So it cannot erode. Then water will take a turn and start falling. So we have two words when I explain waterfall. One is rapids and waterfall. What is the difference between a rapid and a waterfall? Many rapids join together to become one. So rapids are smaller occurrences, whereas waterfall are larger occurrences. So samajh mein aaya? So these three patterns I will first make you to understand, then you can draw the picture. But sir, in rectangle, when the two curves are meeting, so the water will just flow like this. This one, correct, she's right. Abhi ye hai na, so it might flow downward also, no issues. But it might be the landform where it is flowing from. For drawing, we can do our side. But imagine from where it is flowing. The landform might be not helpful this side. It is helpful only this side. So the stream might have taken and joined, and if बाजू में जाके फिर इधर से ही join जाएगा, सब जाएगा. So only we are worried about this pattern. So that is called a rectangular pattern. Correct? So let's move into the volume. Look at that. The dendritic pattern. Put number 1 and make a small rectangular box there only. Develops where the river channel flows the slope of a terrain. Are you finding it or am I going fast? The stream with its tributaries, underline, resembles branches of a tree. In exam, you have to write this. Hence, dendritic or dendritic. Second one, a river joined by its tributaries, underline, approximately at right angles. Why they are using that approximately? Because not properly right angle. Properly right angle. Which angle it is? Approximately right. Which angle? Approximately. But which angle? Not an angle. If it is not 90, then it's not. Which angle it is? Acute angle. But then why it is right angle then? Consider it. Formation, not right angle. Wait. No, you are already confused. Dhriti. Dhriti. अगर right ये है ना Dhriti. अच्छा सिद्धि. We don't have a Dhriti. अच्छा, might be another class. Siddhi, tell me. If she is saying approximately, then what will happen? She's right as per the words. We can't have exact right angle.
Maybe in future this right angle might vanish also. Why? Course or river They might change because there is no hard and fast rule. Right angle to right angle ही बनने का. I will take a D and start measuring. नहीं sir, अभी 87 degree में बन. Nothing like that. River है, it will flow. Okay, so correct. As you were saying, I was confusing you. Drainage pattern develops where underline hard and soft rock. Hey, sorry, that is trellis. Trellis ही कर रहे हैं ना हम लोग. हाँ, trellis drainage pattern develops underline hard. Hard के ऊपर एक पूरा एक arrow लेकर आओ and write pervious layer. Now you remember these words. Hard rocks means pervious. Impervious. I'm sorry. Impervious. VIOUS. And soft rock रहेगा तो you write pervious. Which rock will be eroded? Pervious will be eroded. Impervious cannot be eroded. Hard and soft rocks exist underline parallel to each other. Okay, so basically the whole thing. Yes, the rectangular drainage pattern, open bracket, develops on a strongly jointed rocky terrain. Oh my god, forcefully words, huh? What's this word strongly jointed rocky terrain? Are you seeing rectangular pattern? They have given, so the picture is not clear. A combination of the radial pattern develops, fourth one, streams flow in underline different direction from a central peak. Okay. Or a dome. Chalo, put the heading, write only the names. Dendritic, write the branches of it. Trellis, what it is. Rectangular, no need to draw the picture. I don't think they, for your level, they ask you any diagram. In ICSE, they ask. Or if you want, you can write one sentence of each, whatever you want. Then we'll have drainage system. This is the major topic. A layman comes into the class and see what is all this sir has drawn, all sketches, caricatures, not any meaning. You guys understood all that four pattern? Yes. Okay, now look at this heading. I will give it to both of the new students. Hai na? First, she will start with Himalayan rivers. Let's see how she reads. Come on. Hey, is this three river system clear? In India, we have major river system this, and the next one is peninsula. What is peninsula? An area covered with three sides of water. Okay, so she's explaining peninsula. Good. But this is the last river system. अभी हम लोग इन तीनों को Peninsula is a river system? हाँ, river system that is South Indian perennial river, non-perennial. I call this three rivers as North Indian rivers. These are South Indian river. I What don't is the put. Krishna Godavari or the? Yeah. Oh, Krishna, Godavari, Tungabhadra. Come on, start. Himalayan rivers. Hmm. The rivers of Himalayan system are snow-fed rivers, hence they flow throughout the year. Underline the word throughout. Carry on. In Good. the rainy season, they are generally flooded and carry a huge amount of water, about 70%, into the sea. Such rivers are called perennial rivers. Underline the word perennial. Hey, you know the difference between perennial and nobody is not anybody. What is non? What is perennial? It flows throughout the year. Just throughout the year. Through why it is throughout the year? Okay, like perennial snow, something which is covered throughout the year. Understand? It has two sources of water. Which are the first source? Glaciers and Glacier. Melting of snow. Please write down. Perennial के बाजू में लिखो. Melting of snow and rainfall.
That is why it flows throughout the year. Like normally before the rainfall also they have copious water. Have you heard about the word copious? Geography sir नया भारी भरकम वर्ड लेकर आते हैं. हर क्लास में ऐसा होता है. ठीक है, next time से नहीं होगा. The word is copious. Guess तो करो. What is copious? ज़रूरत से ज़्यादा. Extreme. I don't know whether you have seen, at least in the picture, the Brahmaputra. My friend is there in Meghalaya today. He is doing some sightseeing और रोज कुछ ना कुछ फोटोज भेजता रहता है. वो बोलता है कि एक एज से दूसरा एज दिखेगा नहीं ब्रह्मपुत्र. एक बैंक से दूसरा बैंक नहीं दिखेगा. Huge. And it is very gigantic. I also visited, but I just one of the god ने क्या किया? तो क्यों किसके ऊपर गौर कर रहा था? ठीक है. नहीं मतलब हो सकता है ना. टूरिस्ट टाइप तो मेरा भी ध्यान टूरिस्ट के पास ही जाता है. ये लोग क्या कर रहे हैं? Normally we say in India we have Ganga. What is the nature of the word Ganga? It is holy river. In fact, it doesn't receive the name Ganga when it starts. Correct? It meets a place called Alkananda and Dev Prayag. उत्तराखंड में है. उधर से उसका नाम गंगा पड़ता है. तो किसी ने बोला शायद उधर कोई गंगा करके लेडी ने डुबकी मारा रहेगा और आया नहीं, तो उधर से नो ऐसा नहीं. The glacier is very very holy. It starts all the way from Himalayas, and even today we worship. I don't know if you next time happen to travel to Kashi and Varanasi. There is that Sandhya Aarti evening, 6 to 7 they do it every evening. From Banaras. She might not have gone. I'm not sure. Yeah, nobody visits that. And they say for last 400 years this Sandhya Aarti is done. आप लोग ने शायद पिक्चर्स में वीडियोस में देखा भी रहेगा. देखो lines of that people. It is usually just tourists that attend that. They are. Now you come to Maharashtra also, we have a Ganga. Suddenly people are shocked. Maharashtra में कहाँ से गंगा आने लगा? We call it as Vai Ganga, Pain Ganga, Varna, Purda. ये सब कौन सा जगह का नाम है जहाँ से जाता है? It is the river called Godavari. Godavari सुना है? वो आके जो people गरीब है बोलता नहीं मैं हिमालय तक नहीं जा सकता है, तो बोलता महाराष्ट्र में कर सकते हैं. There are many rituals we do now after the death of a person. People go to this Godavari banks also. So it is called as Dakshin Ganga. What does Dakshin means? South. And it has the same holiness of the river Ganga. She is having some. बोलो. No, only both second. What is it? Why it is called as Dakshin Ganga? It's not even in Dakshin, it's in West, it's in Maharashtra. No. देखो, hey, listen, guys, don't get confused. ये है हमारा peninsula ये है. So these rivers like this, ये गंगा है, Yamuna. I'm just showing it, and Brahmaputra is flowing from here, enters into Arunachal Pradesh called Dian, and comes into India and goes into Little India called Bangladesh. So these three main river systems are called as North Indian rivers. अभी यहाँ से ये है नर्मदा, तापी, गोदावरी, then we have Krishna, Kaveri, all are called South Indian rivers. अभी ऐसा डिवाइड किया इंडिया को, North Indian, South Indian. समझ में आया? Actually, तो अपना को वेस्ट इंडियन नहीं बोलती है ना? अरे वाह, कॉन्फैक्ट. You don't call it as West Indian, right? I'm not Indian. See, you're a North Indian. Yeah, I'm from Banaras. देखो first word we all that like she is asking, we say first are we Indians? तो तुरंत लड़का बोलता रुको सर डाउट तो क्यों है? मम्मी बोलते कभी लंदन से आती है, कभी पापा बोलते हैं वेस्ट इंडीज से आता है, मैं पता नहीं कहाँ से आता है. मतलब तू जहाँ से भी आया बेटा तो इंडियन. हाँ ठीक है, अभी एंग्लो इंडियन तो मैं बनने से रहा. You know who is an Anglo Indian? Ruskin Bond. That is the only Anglo-Indian action. Relax. She carries lots of anything in my class. But whom we are calling as English descent and Indian British descent. Indian. What is half British, half. वो सर यहाँ से यहाँ British है. नहीं, her से white with her से मैं. ऐसा कुछ नहीं होता. हाँ, और तो Ruskin Bond का से मैं. either the mother or the father belongs to. That's what I understood. So normally when I used to lecture some other part, I never take a single Hindi word to एक लड़के को. So why don't you speak Hindi? मतलब English is our official language. क्यों तू लंदन से बने क्या? तो जब बार-बार पूछ रहा था तो एक दिन मैंने बोल दिया I belong to London. मुझे physical pictures तो नहीं लग रहा है. ये मम्मी वहाँ की है, पापा यहाँ का है ना? That is next time they will not ask. So normally when we discuss all these things, I believe
Every Indian is attached to a river. Are you? Yes. Very good. Why every Indian? Because our civilization itself is from a river. Which civilization it belongs to? Indus Valley civilization. Indus Valley civilization. Indo-Gangetic. Indo-Brahmaputra. हमारा बच्चा बोलता रिवर किधर देखा है? घर में वो टैप है, शावर है, वॉशरूम में इतना ही रिवर तो नहीं देखा मैं. And he is correct also, he or she. But you see, this village people are always attached. है ना? चलो, let's proceed. My village, Dadi's village, is based on the bank of river. Yeah, unless until you don't go and visit. I visit every time. It's walking 2-minute distance. I live there. But you don't walk. I won't. ठीक है. I did not cut my legs off. Okay, go ahead. The Himalayan rivers have a long course from their source to the sea. They perform intensive erosional activities in their. Underline that word intensive. What is intensive? Maximum. Since they are perennial. Next. In their upper course and carry huge loads of silt and sand. In the middle and the lower courses, these rivers form meanders. Meanders. Oh my dear. Meanders. Oxbow lakes, and many other deposits. Underline the word oxbow lake. Just understand how does an oxbow lake forms. So when you look at the river, when it is normally in the which course? Lower course, na? It takes a meander and joins the sea. Sometimes what happens, since a lot of deposits, the river is depositing sediments here. In between it might have taken some, क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, सर खिसक के निकल गया है. But deposit जब ज़्यादा होता है, it flows in a different direction. Are you seeing? Yes. So this part of the river gets cut. It forms like this. Similarly, when it is taking this path, अभी ये path भी continue नहीं होगा. So we'll say it is cut from here, and this stream goes and joins like this. Just happening, huh? So this part is cut off. So it is normally representing an oxbow. You know what is an oxbow, na? Yeah. Since it is a stagnant water, we call this as a lake. पहला तो इसी का stream था. But now it is cut off because of huge deposits. It just looks like this is ox. that is that bow. So that is why we call this as oxbow lake. Please put this in your notebook and draw this. They might ask you why it is an oxbow lake. Why is his reaction time so slow? Come on. Yeah. Shall we? Okay, let the new boy read. You just The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. Okay. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river, along with its tributaries, may call a river system. Underline that. That's already underlined. Come on. Go ahead. Indus. The Indus River system. The river Indus rises in the Tibet near Lake Mansarovar. Following west, it enters India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. Underline that Lake Mansarovar. What we can write above Mansarovar? It is a source. Go ahead. Several tributaries. I'll read. Look at the names. The Jaskar, the Nubra, the Shok, and the Hunza. Sounds like a chant. That's what. These are this Indo-Gangetic type. In fact, many people say Indians did not follow a religion called Hinduism. No. How is that? How is that? Will you prove me wrong? We were belonging to the Indus and the Hindu Kush mountain range. Hindu Kush. Afghanistan mein hai, India mein nahi. So when the Britishers, when these Mughals started attacking India, capturing India, Britishers called themselves British.
or Christians. है ना? And the Mughals or the Mongols थे वो, they call themselves as Mughals, Arabs. तो Hindus बोला, sorry, Indians बोला हम कौन है? तो किसी ने बोला रहेगा Hindu है हम, because we follow the Hindu Kush. So there was no religion. We were only calling ourselves as Hindu. You go to America even today, there is a community which is called as Aboriginal, original Native Indian, Native Americans. They call themselves as the worshippers of Lord Shiva. They worship even Lord Pashupati Nath. They are called as Red Indians. Actually, Americans को बोलने का भाई तू original American नहीं है, वो Red Indian है, वो original American है, and वो आज भी Hinduism को ही follow करता है. I don't know if you have watched a movie called Anaconda. Yeah. Watch it, the part 1. जो initial pictures है वो Red Indians को दिखा है, and वो बड़ा snakes दिखाएंगे, and they are worshipping Lord Shiva. So slowly, I'm not a preacher of that, but we say this Sanatani, the word, is there in every part. Even the biggest Makkah, if you have seen, you know where is Makkah? Yeah. Where is it? It is in Saudi Arabia. Many people say there was a 6 feet or a 7.5 feet big shivling was found. And किसी ने मुझे story में बोला sir, when Ravana was killed by Lord Ram, the sister Surpanaka, she flew away. अभी रावण की बहन है तो वैसे ही करेगी. तो किसी ने बोला अगर तू राम से बचना चाहती है तो शिव का पूजा कर. And even from there only. Last time I told you. She made an artificial shivling, which was in Saudi, and she started preaching कि मुझे राम आके नहीं मारे. So when the first king of that what is that KSA, Kingdom of Saudi Arabia, he found हम तो मुस्लिम हैं, ये suddenly ये कहाँ से ये शिवलिंग आया, तो he constructed a wall covering that. This is how the Mecca has come, and it is a cursed land. सब लोग बोलते हैं gifted land है. आज भी उधर एक curse है, पता नहीं whether this correct or not. If any true individual without eating any non-veg in his life go and touches that, then Saudi Arabia will be packed with ruins. तो इसलिए they give them a water. आप अपने मुस्लिम friends को बोलो जमजम का पानी दो. जमजम जैसे हमको तीर्थ मिलता है, तो every Muslim has to drink it. And मैंने पूछा भी है कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स से, लोग बोले जमजम का पानी और कुछ नहीं है, उसमें फैट्स ऑफ काऊ मिलाया जाता है. अगर सोचा आप मुस्लिम ही है बट यू हैव नेवर ईटन एनी नॉनवेज, और उधर मक्का के अंदर जाने से पहले आपको पानी पीना चाहिए. इट इज अ मस्ट. एंड दे थ्रो स्टोन्स आल्सो. एंड वो बोलते हैं कि हम लोग क्या हिंदू में क्या बोलते हैं उसको, ड्रैगन को मार रहे हैं. And it is not they are beating, they are putting the stones for this shivling only. Okay, chalo. Next time I'll see you. Sorry for today's delay. Next time I'll be perfect on time and we'll continue with this chapter. Try to do some question answers of the same.